ड्राफ्टमैन के लिए लेक्चर नंबर 9 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है और सारे कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 9 है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैजार्ड डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल हैजार्ड्स। निम्न में से कौन सा फिजिकल हैजार्ड की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता? रेडिएशन, वाइब्रेशन, नॉइस, रेडियो एक्टिविटी। तो हैजार्ड्स 3 टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल हैजार्ड्स। इससे रिलेटेड थियोरी है वो भी एक दिन डिस्कस कर देंगे, केवल थ्योरी वाइज। तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा? जो फिजिकल हैजार्ड्स। Which one of the following hazard does not come under the category of physical hazard? Radiation, vibration तो नहीं होगा। Radioactivity is a type of chemical hazard. There are 8 types of occupational health hazard: physical, mechanical, chemical, electrical, biological, ergonomic, psychological and physiological hazard. All are classified as noise, vibration, radiation, illumination and heat and cold states are the types of physical hazards. And chemical hazards are inflammable, radioactive, explosive, corrosive and toxic. Biological hazards are bacteria, virus, fungi, plant-based infections. Physiological, ओल्ड एज, हेल्थ, सिकनेस, फटीग, इस टाइप के जो हैजार्ड फिजियोलॉजिकल आते हैं। साइकोलॉजिकल के अंतर्गत रॉन्ग एटीट्यूड, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, अनडिसिप्लिन जैसे कि एब्सेंटिज्म, डिसओबीडियंस, एग्रेसिव बिहेवियर, एक्सीडेंट प्रोननेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस लाइक वायलेंस, बुलिंग एंड सेक्सुअल हरासमेंट, इस टाइप के हैजार्ड्स साइकोलॉजिकल के अंतर्गत ये आते हैं। अनगारंटेड मशीनरी, नो फेंसिंग, नो सेफ्टी डिवाइस, नो कंट्रोल डिवाइस, दीज आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल हैजार्ड्स। इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत नो अर्थिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, करंट लीकेज, ओपन वायर, नो फ्यूज और कट ऑफ डिवाइस। लास्ट है इरोग्नोमिक इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत पुअर मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक, wrong layout of machinery, wrong design, poor housekeeping and wrong tools are classified as ergonomic hazard. Next question है, 5S is a system used. 5S system किस में यूज किया जाता है? इन प्रोडक्शन पार्टिकल्स, इन प्रोडक्शन प्रैक्टिस, इन सेफ्टी प्रैक्टिस, इन हाउसकीपिंग प्रैक्टिस या इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग। It is a housekeeping practice. 5S. 5S means 5S is a 5-step methodology for creating a more organized and productive workspace for sort, set, sign, standardize and sustain. There are 5S: sort, set, sign, standardize and sustain. 5S are particularly effective because they want to improve housekeeping in order to obtain the following advantages. These advantages are keep with the help of 5S methodology in housekeeping. Next, which one of the following is personal safety? Type of safety. Personal safety का example, keep the machine clean, cleanliness में आ जाएगा। Concentrate on your work, keep the gangway and floor clean, keep the tools at their proper place. So concentration of your work is a type of personal safety.
There are three categories on workshop, that is general safety, personal safety and machine safety. Personal safety lies in concentrate on your mind during your job work. Have calm attitude, do not think in a methodical way. Which of the following are Indian organizations for standardization? Standardization is given which organization? ISO, GIS, BIS or DIN? तो ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. तो BIS is an organization for standardization. All full form are given below. BIS, ISO, JIS, JIS for Japan, JIS for Japan, BSI British Standard Institution, D GOST रशियन है, ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन जर्मनी DIN है, डची इंडस्ट्री नॉर्मान standardization of ISO. BIS is for Indian. Which one of the following is our methods of disposal of waste? Methods for disposal of waste: recycling, composting, incineration. All of the options are correct. Disposal steps: recycling, composting, landfilling, incineration, waste, compaction, refuse, animal feed, and firewood. These are the type of food waste management. Next, as per the ISO safety code, the color used in the triangle for toxic hazard. Toxic hazard symbol color blue, white, yellow or orange. Toxic hazard means white, blue, yellow. Yellow color is used for toxic hazard in ISO safety code. These are the warning sign. This symbol represents the risk of fire, electric shock, toxic hazard, that is in yellow color. Corrosive substance, risk of ionization, radiation, laser beam, general warning, risk of danger, overhead fixed hazard, risk of explosion. Question directly asked from these signs, warning signs. There are four basic categories. Sign are as follows: prohibition sign, mandatory sign, warning sign, and informatory sign. These are the some type of warning sign where toxic hazard is yellow in triangle. What is the first aid treatment for victim of electric shock? First aid treatment for victim of electric shock: cooling down the victim, artificial respiration provided to the victim if the victim is not able to breathe on its own. Don't keep the victim still, preferably sitting or laying down. That means artificial respiration is provided to the victim if the victim is not able to breathe of its own. Is the first aid for the victim of electric shock. Symbol type which color? Warning, mandatory, prohibition and information. Yellow for we already discussed. Yellow color for warning sign as a toxic hazard. Then A3 prohibition with the help of red color, yellow warning, blue mandatory, green informatory. Informatory sign was used as green background as this. Yellow for warning sign, yellow or amber for warning sign, prohibition, danger alarm for red, blue mandatory,
green information firefighting equipment, red firefighting sign are used as red background. Next, in which class the fire drive power existing used? In which class of the fire dry powder extinguisher is used? That is class D. फायर के लिए जो जो क्लासेस रहते हैं वो देखते हैं कौन कौन से रहते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है। Class A fire involves paper, wood and other ordinary combustibles. Class B fire involves flammable liquid such as gasoline. Flammable liquids are come in class B as ordinary combustible material are come in class A fire. Class C fire involves energized and electrical equipment such as tool wiring, fuse boxes, appliance, TVs, computers, electric motor. Class C is related to electricity. Class B for paint and solvent as flammable liquids. Class A for ordinary combustible. Class D for combustible metals. Combustible metals are in class D. Class K for grease in commercial cooking equipments. And powder have been developed to deal with class D fire. क्लास डी के अंतर्गत कौन सी फायर आती हैं? तो कंबस्टिबल मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम. The box which contains the usual medicine, cartridge, bandage, etc. is called first aid box. फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मेडिसिन, कॉटन, बैंडेज. Which shape is used for provision and mandatory type of safety signs? सर्कुलर होते हैं. सर्कुलर सेफ्टी साइंस के अंतर्गत प्रोहिबिशन और मैंडेटरी आते हैं. दीज आर द मेन इम्पोर्टेंट साइन. प्रोहिबिशन जो रहता है वो सर्कुलर ही होंगे और कलर जो होगा रेड रहेगा, कंट्रास्ट वाइट से लिखा रहता है. मैंडेटरी एक्शन सर्कल ब्लू रहेगा, वार्निंग येलो में, इंफॉर्मेशन ग्रीन से, फायर सेफ्टी रेड से. नेक्स्ट है हेलोन या सीटीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश. इलेक्ट्रिकल फायर अगर हो रही है तो उसमें हेलोन या सीटीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड. वाटर फील्ड टू टाइप्स के होते हैं, गैस कार्टेज एंड स्टोरेज प्रेशर टाइप. फोम एक्सटिंग्विशर भी तो के लिए होते हैं, फ्लेमेबल रनिंग लिक्विड फायर के लिए. ये तो पड़ा है ड्राई पाउडर क्लास डी फॉर ड्राई से मतलब CO2 का भी यूज़ किया जाता है. हेलोन एक्सटिंग्विशर फॉर इलेक्ट्रिकल फायर के लिए. इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अगर हैं तो उनके लिए सीमेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड BCF ब्रोमो क्लोरो डाइक्लोराइड का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है ये कौन सा साइन दिखाया गया? एक्सप्लोजन, डेंजर, हार्ट इंजरी, दैट इज सिग्नल फॉर डेंजर. और देखते हैं ये था भी पहले पढ़े भी थे. रिस्क के लिए रिस्क ऑफ फायर, दिस इलेक्ट्रिकल, टॉक्सिक हजार्ड, लेजर बीम, रिस्क ऑफ आयनाइजेशन जा सकता है, रिस्क ऑफ आयनाइजेशन, रेडिएशन, कोरोसिव सब्सटेंस, ऐसा कोई सब्सटेंस जिससे जंग लगने का खतरा हो तो ये देखा है. रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, ये बम का फट रहा है इस टाइप से. ओवरहेड, ये हेड के ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर है तो ओवरहेड हो जाएगा. जनरल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर, दैट इज डेंजर का साइन है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स? ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ऑप्शन में दिया हुआ. इट इज़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, हेलमेट्स, गॉगल्स और अदर गारमेंट्स और इक्विपमेंट डिजाइन टू प्रोटेक्ट द wearer's बॉडी फ्रॉम इंजरी और इन्फेक्शन.
नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC इन फर्स्ट एड? दैट इज एयर वे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। तीनों की डिफिनेशन दी हुई है। नेक्स्ट है द कॉमन मेथड फॉर एक्सटिंग्विशिंग ए क्लास ऑफ फायर बाय यूजिंग। जो एक क्लास की फायर होती है वो ऑर्डिनरी मटेरियल से लगती है, जैसे कि वुड वगैरह से। तो इसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है? ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर तो क्लास डी के फायर इन